Okay, friends, Prisha, Swara, Arya, let us start to know about the hydrocarbon compounds. First of all, the compound which are consist of two types of element, that is carbon, hydrogen and carbon, they are known as hydrocarbon compounds. In organic chemistry, there are four types of hydrocarbon compound. First one alkane, second one alkene, third one alkyne, fourth one alene. Today we will talk about only alkane, its types and its molecular formula and structural formula and name. Up to 6 carbons we'll take. Acha, alkane, what is alkane? To be alkane compound, there is a condition, that is, if there is a single bond between two carbon atoms, they are known as alkane compound. Alkane may be classified in two types. If there is a linear chain of carbon atoms are arranged in a linear chain, and you can observe two terminals. In chain, only single bond will be present between all the carbon atoms. No double bond, no triple bond. And that type of alkanes are known as a non-cyclic alkane. The general formula is CnH twice N plus 2. Second type of alkane compound is cyclic alkane compound, in which carbon atoms will attach to each other through a single bond and create a cycle. And they are known as a cyclic alkane. And their general formula is CnH twice N. नॉर्मली प्रिशा जितने कार्बन होंगे इससे हाइड्रोजन डबल होंगे, यहाँ जितने कार्बन होंगे उसके साथ में हाइड्रोजन डबल प्लस 2 रहेंगे. Now from this formula, yes, we will take the N value and finally we will get some molecular formula. Yes, substitute N value 1 in this formula, C1H4, CH4. Its name is methane. Structure will be CH, carbon is surrounded by 4 hydrogen atoms. When N value 2, at that time C2H6, name will be ethane. In ethane, 2 carbon atoms are linked to each other through single bond, remaining, yes, इसमें देखो 1 valency of each carbon atom is satisfied. Remaining 3 valency of each carbon atom will be satisfied by hydrogen atom, because they are hydrocarbon compounds. No other element will be present. हर बार ऐसे नहीं लिखा जाता. This carbon is attached with 3 hydrogen. That's why CH3 single bond CH3. ये है. When N value is 3, at that time C3H8 propane. First of all, you write down the 3 carbon in linear chain. First carbon के साथ 3 hydrogen, 1, 2 and 3. अच्छा चलो, इनकी वैलेंसी कितनी कम है? 3, तो CH3. इनकी 2 वैलेंसी कम है तो CH2. यहाँ 3 वैलेंसी कम है तो CH3. ऐसा लिखा जाता है. If N value is 4, then C4H10. Its name is butane. 4 carbon, 1, 2, 3, 4. देखो 1, 2, 3 and 4. Now you calculate the total number of valency which is satisfied. यहाँ एक ही वैलेंसी satisfy है, 3 वैलेंसी कम है तो 3 हाइड्रोजन लगा दो. This carbon इनकी 2 वैलेंसी satisfy है, that's why यहाँ CH2, यहाँ CH2. टर्मिनल कार्बन की साथ 3 हाइड्रोजन होंगे.
ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड CH3. इट इज यस, ये दोनों साथ में भी लिखा जाता है. CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 टू टाइम्स सिंगल बॉन्ड CH3. ये और ये बोथ आर सेम. When N value is 5, C5H12, its name is pentane. तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3. मिडल कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे और टर्मिनल कार्बन will attach with 3 hydrogen atoms. Yeah, 3 CH2 group. That's why we can write this way also, CH3 single bond CH2 3 times CH3. Then finally N value is 6. At the time C6H14. Alkane having 6 carbon known as a hexane. 6 कार्बन की चेन लिख दो, टर्मिनल कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगा दो और इंटरनल मिडल में जो कार्बन है बीच में उनके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच कर दो. तो यहाँ हाउ मेनी CH2 ग्रुप्स, 1 2 3 एंड 4. इसको ऐसे भी लिखा जाता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 4 टाइम्स सिंगल बॉन्ड CH3. ये और ये बोथ आर सेम. These are the non-cyclic alkane compound. Finally, all the organic compounds are derivatives of alkane compound. समझ लो. तो alkane having 1 carbon is methane, alkane having 2 carbon is ethane, alkane having 3 carbon is propane, alkane having 4 carbon is butane, alkane having 5 carbon is pentane, alkane having 6 carbon is hexane. नॉमेनक्लेचर में काम लगेगा ऐसा. Yes, second type of alkane is cyclic alkane. Its general formula is CnH twice N. Yes, N वैल्यू, इस फॉर्मूला पर से हम N वैल्यू डिफरेंट लेंगे. Yes, you see the definition of cycloalkane. Alkane compound in which carbon atoms are arranged in a cyclic system. Yes, is it possible, Prisha, cycloalkane having 1 carbon? No. Why? एक ही कार्बन है, साइकिल पॉसिबल ही नहीं है. साइकिल क्रिएट करने के लिए मिनिमम 3 कार्बन्स आर रिक्वायर्ड. एन वैल्यू 2 लेंगे C2H4. Not possible. Cycloalkane having 1 carbon is not possible. Cycloalkane having 2 carbon is also not possible. 3 कार्बन से पॉसिबल है. 3 बार कार्बन की, यस ये लिख दो, 3 कार्बन को साइकिल बना दो. तो ईच कार्बन के 2 बॉन्ड सेटिस्फाई है. रिमेनिंग 2 बॉन्ड्स आर सेटिस्फाइड थ्रू 2 हाइड्रोजन. मीन्स साइकिल में हर एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं. तो इसको इस तरीके से हर बार नहीं लिखा जाता. यहाँ लिखो, ये कॉर्नर है, वहाँ कार्बन है एंड कार्बन इज अटैच विथ 2 हाइड्रोजन एटम्स. यस, इन केस ऑफ N वैल्यू 4 ले लो, C4H8, C3H8 साइक्लोप्रोपेन नेम होगा. उसका स्ट्रक्चर ये है. या तो कॉर्नर पे CH2 लिख दो चलेगा, नहीं लिखो ये ट्राइंगल कर दो, इट इज ऑल्सो साइक्लोप्रोपेन. When N value is 4, at that time C4H8, it is butane, cyclobutane. Alkane having 4 carbon is known as a butane, and this follows that formula. That's why cycloalkane है, cyclobutane कहा जाएगा. और ब्यूटेन में 4 कार्बन हो गए तो स्क्वायर बना दो. All the corners possess CH2 group. When N value is 5, at that time molecular formula will becomes C5H10. Its name will be cyclopentane. तो pentagonal figure draw कर दो. And each corner will have CH2. When N value is 6, at that time C6H12 is molecular formula, and
Alkane having 6 carbon is known as a hexane. But यहाँ this formula follows the CnH twice in formula. That's why this is the cycloalkane type compound. And that's why its name will be cyclohexane. या हेक्सागोनल साइकिल कर दो. हर एक कॉर्नर 6 कॉर्नर है, हर एक कॉर्नर पे CH2 है. तो ये अपना हो गया अल्केन के 2 टाइप्स, नॉन साइक्लिक अल्केन और साइक्लिक अल्केन्स. 6 कार्बन तक हमने ले लिया. ओके, थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट टाइम वी विल गो ऑन अल्कीन. ओके स्वरा.